फर्क पड़ता में है टुडे वी हैव अ गेस्ट ऑन सेट जिनका नाम है नवीद इलियास साया. ही इज एन एंटरप्रेन्योर, अ कंसल्टेंट एंड एन एग्जीक्यूटिव कोच एंड बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट. वेलकम टू द शो. थैंक यू जी. अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक. अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि नवीद इलियास जो हैं वो एक प्रोमिनेंट फिगर हैं एंड ही हैज़ बिन अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इनके एक्सटेंसिव काम इनने किया हुआ है सेल्स एंड नेगोशिएशंस के अंदर. ये ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन कर सकते हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ एंड वर्बल क्यूज़, जिस तरीके से वो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं. ही इज़ बिन अ पार्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज एज वेल एंड ही इज़ वर्क विद अ लॉट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. और उनकी लीडरशिप से अगर आप देखें तो काफ़ी डिफरेंस भी हुआ है. थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बॉडी लैंग्वेज देखें डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से रजिस्टर होती है. अगर मैं यूँ करके रोज़ आपके साथ शो करूँगी तो ऑब्वियसली आई कम अक्रॉस एज समवन डिफेंसिव, बट यूजुअली अगर आप देखें तो मैं अपने हाथ मुख्तसर तरीके से या बहुत लाउड तरीके से हिला रही होती हूँ जस्ट टू बी अ वेरी इंगेजिंग पर्सन. सिमिलरली अगर मैं आपको आई कॉन्टैक्ट दे रही हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी सिंसेरिटी है. काफ़ी दफ़ा आपकी माँ भी आपको कमरे के कोने से आंखें दिखा रही होती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, राइट? सो डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से होती है. दिस इज़ जस्ट माई ब्रीफ इंट्रो एंड नाउ वील आस्क नवीद to explain it to us. So Naveed, I hope I've done justice to your craft. Thank you ji. Thank you for the introduction. Thanks. So I think before we talk about body language, you know, the first thing जो लोगों के जहन में आता है ना वो ये आता है कि यार body language means कि आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं. This is, you know, part of the very small thing. Usually what happens is body language, not exaggerating, but अगर हम वैसे देखें तो जब से आप पैदा होते हैं till you die, anything and everything that you do has to do something with the body language. Yes. The kind of respect that you get, how people trust you, your credibility. Yeah. उसके अलावा लोग आपके साथ दोस्त बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते. लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आपकी बात को माना जाता है कि नहीं जाना जाता, आप अच्छे सेल्समैन हैं कि नहीं हैं, आप अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इन सब का दारो मदार जो होता है ना वो एक बहुत बेसिक चीज़ पे होता है, एंड दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज. सो दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट इट बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ वर्क इंटरनेशनली एज वेल. सो एंड देन इट्स नॉट जस्ट, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. यू नो, जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी ईजी कि आप कभी आपने कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसका वॉइस नहीं सुना बट आप देख के हंस रही हैं? Yeah, of course, you know, body language, of course. So it is body language. बहुत बार it's, and according to research, for example, what happens is कि it's 80% which you communicate is not what comes out of your mouth. Yeah. It is your tone of voice, it is your body language, and that's why I think it's a wonderful topic. So what I would, you know, what I tell people is कि बड़ा ज़रूरी है body language improve करना, how you improve it, what are the areas which are there, and then eventually how to do it. Because it's your packaging, right? But it should come from inside of you rather than just, you know, आपको अंदर से confident feel होना चाहिए. How it happens, we can talk about it. Yeah, of course. तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी. I mean, you've explained body language pretty well और ये क्यों essential है. तो can you explain the concept of mirroring to me as well? कि जिस तरह, what is mirroring? Yeah. Okay, that's a wonderful concept. Yeah. अच्छा, before I tell you what mirroring is, मुझे बताएं, who do you love the most? Well, he's a philosopher who's dead. Okay. Alan Watts. What kind of answers do people give when we ask them, who do you love the most? Usually, oh, you meant in terms of personally? In terms of personally, in terms of professionally, my family, my kid, my son. A lot of people would say my son, my family, my kids, my spouse, my parents. My family. कभी आप ये सोचें कि why do you love them? Because there's a resemblance of our body language with them, right? वो वही कहते हैं ना, apple doesn't fall too far from the tree. Exactly. तो वही उठाते हैं हम, छब वही होती है. Exactly. Yes. And also when you're interviewing, who do you select is the one who is like you? Yeah. अपन सबको अगर गोल घूम के देखें ना, so you eventually like yourself the most, and anyone who is like you like them the most. Yeah. So mirroring is that concept, right? If I'm talking to you, and if my body language is something which is like yours, the probability of you liking me is going to be more as compared to someone else. So mirroring can be body language. Yeah. Mirroring is also not just body language. It's basically familiarity.
अच्छा, so you know, Naveed, if I had to ask you basic ways in which कि लोगों को बैठना कैसे चाहिए, so would you demonstrate that for us as well, or would you tell us a little कि you know maybe some key points के back कैसे सीधी यूं होनी चाहिए, shoulders कैसे यूं होने चाहिए, गर्दन, you know, so I think these things are so important. Especially देखें, I'm somebody who comes on TV, right? And काफ़ी दफ़ा you know you're sitting for long hours and you get tired और आप अपने गर्दन या आप अपना हाथ आगे कर लेते हो, आप थक जाते हो, and how does that come across, right? So अभी सिर्फ अगर मैं as an example लूँ, अगर मेरी audience मुझे देख, तो what are some of the short ways in which you can tell me कि रेजा सांस अंदर किस तरह लेना है, ऊपर कैसे बैठना है, गर्दन कैसे सीधी करनी है? Exactly, बिल्कुल. So the first thing is आपका end goal क्या है? To appear confident. So if you want to appear confident, how would you see someone? So आप जब किसी को देखते हैं, तो when you can tell that this person is confident versus this person is not confident, and that's how we start off. So according, as you said, you know, someone who's sitting like back this, straight, a little bit of back straight is the first thing, which is the case. Second, shoulders smile, back, which tells you smile. Smile, you know, yeah, of course. Which tells you you're more confident, right? Of course. And then shoulders, which is also very good. And then maybe some people are sitting like that. Some people are sitting like that. And then it also has to do a lot with the situation you are in. So for example, if you're sitting at an airport और कोई आपको ऐसे देख रहा है, and you're like, oh yeah, maybe you know he's here because of this, so they won't feel bad. But if you're doing the same thing in an interview, of course, it is not going to resonate. Of course. So body language A has to resonate with the situation, and B, it has to make you feel confident, like politicians, you know. Yes, of course. Why do you think, okay, I have to vote for this person or that person, is by looking at their body language. It's not what they say, it's how they say it makes all the difference. And that's a very basic science. That is very interesting concept that you've given. अच्छा, तो so you know Naveed, how does it matter कि हम जब अकेले में होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की है, क्या वो हमारे कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है? लेट्स से मैं पूरे दिन खत्म करने के बाद अपने कमरे में जा रही हूँ, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? मैं पूरे दिन के बाद अपने कमरे में जा रही हूँ, एंड आई नो आई एम गोना वेयर अ शलवार एंड अ टी शर्ट एंड आई एम गोना सिट विद अ बुक ऑन द बेड, एंड दैट इज माय बॉडी लैंग्वेज. आई थ्रो माई सेल्फ ऑन द बेड एंड आई वोंट केयर, राइट? सो आई मीन इन मोमेंट्स लाइक दीज एज वेल, क्या वो भी रिफ्लेक्टिव है आपके साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से? इट डज. अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जैसे आपका इनर सेल्फ, एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल, आपका इनर सेल्फ झलकता है आपके अंदाज में, बॉडी लैंग्वेज. इट्स ऑल्सो द अदर वे अराउंड. अच्छा, कि आपका बॉडी लैंग्वेज इम्पैक्ट करता है आपके इनर सेल्फ को. सो फॉर एग्जांपल व्हाट यू जस्ट सेड कि यार मैं बुक ले ली, बेड पे बैठ गए, व्हाट हैपेंस? यू फील थोड़ा सा calmness, you feel satisfaction, you feel, oh yeah, I'm done for the day. Done for the day. So yes, it is reflective, and your body language also impacts your mindset. Mindset, absolutely, very well put. Yeah, that was a very interesting thing. अच्छा, आपको क्या लगता है कि posture कितना बड़ा रोल प्ले करता है in you know professional relationships and in personal relationships? Let's say you have a relationship, you know, a love relationship or a husband or a wife. And if I'm approaching my husband and if I want to talk to him, तो मेरा किस तरह की body language होनी चाहिए so I don't alarm him, let's say? Okay. अच्छा, थोड़ा सा backtrack करते हैं. I always tell them, because being a marketer and you know being all that, you have two tissue boxes right in front of you. दोनों के अंदर tissue quality is same. It's the same company, same brand, everything is same. एक का डब्बा खराब है, फटा हुआ है, थोड़ा सा गीला है, और एक का डब्बा is perfectly fine. Which one would you pick? Obviously the fine one. जबकि अंदर एक ही चीज़ है, यार. Right? So a lot of people say कि यार इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है, does not make a difference. It does make a difference even if when you're putting, you know, a tissue box. Same is the case. Approachability change हो जाती है, and you know we can talk about head to toe analysis. Of course. Okay, for example, from your head to your eyes to how you look, आप किस नज़र से देखते हैं, it also has an impact. And again, it is also the emotional touch. वो कहते हैं ना, जैसे COVID was very contagious. आप साथ बैठे आपको लग गया. इसी तरह से emotions are also very contagious. Yes. So your body language does not only impact you, so true, आपका अपना हिस्सा, but at the same time when you talk to someone, तो आपकी body language से उसके emotions पे फर्क पड़ेगा, and then the overall conversation is amazing. Of course, and I think that's something I've experienced अपने show पे as well. A lot of people come in who are by the end of the show very lively and very active, because मैं इतनी animated होती हूँ, हाथ भी हिला रही हूँ, आंखें भी हिला रही हैं, so I think that really makes a difference.